माईक बंद कर.
Hello, am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. All right, all right. So let's begin with general anesthetics. Okay, all right. So general anesthetics, just like local anesthetics, जैसे वो locally काम कर रहा था, the patient had reversible loss of consciousness. ठीक है? So we looked at the introduction of general anesthetics yesterday in the last lecture. The essential components, and since only one anesthetic agent won't be able to achieve the following components, they are always given in co-administration form. Okay, हमेशा more than one general anesthetic agent दिया जाता है in order to maintain the anesthetic action. Okay, we looked at this neck tumor situation, then the pathway for general anesthesia. All right. सो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी हमने देखा था, हम आइदर एक्साइटेटरी को कम करेंगे या फिर इनहिबिटरी को बढ़ाएंगे. Yeah, we covered this as well. MAC is inversely proportional to the potency and the stage. Yeah. So I asked you all to see कि lipid theory क्या है and protein receptor theory क्या है. Okay. So let's hopefully तुम लोगों ने कुछ देखा नहीं होगा. So let's go through the slides. So what do we have for lipid theory? So it is the anesthetic potency which is closely related with lipid solubility. Okay. So remember, जो हमारे पास जनरल एनेस्थेटिक एजेंट्स है ना, उनका केमिकल स्ट्रक्चर जो है, इट इज नॉट प्लेइंग दैट गुड अ रोल बिकॉज मोस्टली सब वोलेटाइल्स है या फिर गैशियस फॉर्म में है. ओके. So whatever the structure they have, their lipid solubility is really important. Okay, when they say lipid solubility, it is really important. Okay, then we have, just a second. Okay, yeah. Okay, so narcosis commences. Narcosis का मतलब क्या होगा guys? Ma'am, are you sharing the slide? Is it not visible? No. Just a second. Okay. Is it visible now? Yes, ma'am. Okay. So first is lipid theory. जो हमारे structures है of general anesthetic, उनका structure, उनका जो बोलते हैं ना हम लोग state, it is mostly in the gaseous or parenterals, that is liquid form. Okay, mostly volatile liquid. So it is important कि they are lipid soluble. Okay, ये याद रखिए कि it should be lipid soluble. That is this. Next, narcosis commences when any chemically indifferent substance has attained a certain molar concentration in the lipids of the cell. So what is narcosis, guys? सुना है कभी ये word? बेसिकली ड्राउजीनेस होता है, थोड़ा सा नौशिया जैसा लगता है ड्रग्स की वजह से. Okay, correct. ठीक है. So
there is this theory that mere overturn rule that we have. It is the number of molecules dissolved at the site of anesthetic action and not the types of molecules present that causes anesthesia. So what do they mean by this? कि आप कितने भी general anesthetic agents दो, 1 type, 2 type और 3 type, जितने molecules उस particular area पे जाके dissolve होंगे ना in a particular tissue, that will cause the anesthetic effect. Now what do they mean by this? We saw this diagram, ठीक है? Inspired gas, जितने alveoli, suppose we have to see the anesthetic action on a particular tissue. Okay, suppose this tissue, ठीक है? तो हम यहाँ पर से एक anesthetic agent दे, 2, 3, जितने भी देंगे, it should reach here, and not the type but the number of molecules that are reaching at this tissue will cause the anesthetic effect. So that is what is the lipid theory. ठीक है? So also यहाँ पर बहुत सारे चीजें comes into picture. Okay, like partial pressure, then volume expansion, because it is a gas, तो फिर concentration gradient से कितने molecules of gas reach to a particular anesthetic particular tissue, everything is important. Okay, so that is what this theory is all about. See, not the type but the number of molecules reaching the particular site is important for anesthetic action. ठीक है? Next is protein receptor theory. मतलब क्या है? Anesthetics, कभी भी question पूछा अगर, anesthetics can bind to dash and dash, so it should be proteins as well as lipids. Okay, so they also interact with the functional membrane proteins that we have on the cell membrane. Okay, wide range of ligand gated ion channels, वो सब पे वो लोग bind करेंगे. Okay, so what happens is they inhibit the function of excitatory receptors. The example that we saw was NMDA. NMDA का full form क्या होगा? N-methyl D-aspartate. Correct. So it is one of the excitatory receptors. Next we have inhibit neuronal cation channel gated by nicotinic cholinergic receptor. उसको inhibit करेंगे because it is the excitatory one. Next, enhance the function of inhibitory receptors. The example is glycine. Glycine is one of the inhibitory receptors. So उसको वो लोग enhance करेंगे. जो excitatory वाले हैं उनको inhibit करेंगे. Okay, moving ahead. So this table is really important with respect to the agent, the anesthetic agent that we have, and उनका mechanism of action. ठीक है? So एक बार ये table को देख लेना. Okay, we have these examples that would be working on the GABA receptor, majorly the chloride channel. These agents, they will be potentiating on the glycine. Fluorinated anesthetics, इनके पास fluorines होंगे उनके structure में. What would they do? Cholinergic receptors पर काम करेंगे. Nitrous oxide and ketamine, NMDA receptors पर काम करेंगे. Okay, so this is just a part of the summary. ये पहले रखा है मैंने and not at the end, so that you know कि these are the mechanism of action that comes into picture. Okay, तो ये slide भी याद रखा तो well and good. Moving ahead. ठीक है. So in general anesthetics, we have the inhalational ones and parenteral ones. Inhalational ones में देखो volatile liquids है and gaseous state, and parenterals में we have inducing drugs and slow acting drugs. Inducing drugs, मैंने आपको दो words बताए थे. One is induction and the second one was maintenance. ठीक है? So induction के लिए हम लोग inducing drugs देंगे. Inducing मतलब क्या? वो लोग instantaneously पूरा body में spread होकर general anesthetic action को initiate करेंगे, and the slow acting drugs will be responsible for the maintenance. Okay, ऐसे याद रखना पूरे classification को. Majorly general anesthetics में not the structure, because the structure is not important, the classification is important. Okay, moving ahead. Okay, in the inhalational one we have gaseous and volatile liquids. So देखो inhaled anesthetic, ठीक है? तो here we have halothane, N-fluorine. सबके पास बहुत सारे फ्लोरीन एटम्स है.
Okay, and technically it is not possible to remember all the structures, all right, but see, कुछ कुछ चीजें हैं which you can easily remember. Okay, just a second. Okay, yeah. So we have nitrous oxide. I need you all to write down the structure of nitrous oxide, uska plus and minus charge. Every time the plus charge would be on nitrogen and the minus sign would be on oxygen. Can you all tell me how many lone pairs on oxygen? Yes. कितने lone pairs आएंगे oxygen पर guys? मैम 2. Then it has a negative charge. मैम 2. 2 lone pairs. गलत है. कितने lone pairs आएंगे अगर उस पे माइनस साइन है तो? 3 lone pairs. करेक्ट. 3 lone. ओके, वो लिख दो. ओके, नेक्स्ट डाइइथाइल ईथर. ये कहाँ पे यूज हुआ था? सबसे पहले डाइइथाइल ईथर कहाँ पर यूज हुआ था? मैम जनरल एनेस्थेटिक. You remember that neck tumor slide? उधर पर डाइथाइल ईथर यूज हुआ था. नेक्स्ट वी हैव इज साइक्लोप्रोपेन. ठीक है, अब कम टू हैलोथेन. हैलोथेन, एनफ्लूरेन, आइसोफ्लूरेन. कैन यू सी हैलोथेन को छोड़ के बाकी सारे ईथर है, तो प्लीज राइट डाउन दैट पॉइंट फर्स्ट. एक्सेप्ट हैलोथेन, all inhaled anesthetics are ether. Okay, next point. The fluorines that have, please write down fluorines that have this structure in common. Let me highlight it. This OCFH. It is desflurane, isoflurane and enflurane. ये तीनों के पास है ना, ये स्ट्रक्चर कॉमन है, दैट इज कार्बन अटैच टू ऑक्सीजन, 2 फ्लोरीन एंड हाइड्रोजन. सो इसका निमोनिक क्या होगा? डेस, आइसोफ्लुरेन, एनफ्लुरेन. ठीक है, so these 3 structures have CF2 hydrogen attached with oxygen in their structure. सिर्फ एक हैलोथेन है जो इथरल नहीं है, बाकी सारे फ्लोरेन्स आर इथरल. Desflurane, enflurane, isoflurane have this structure in common. Next point, desflurane के पास क्लोरीन ग्रुप नहीं है. Please mention. Only desflurane is the inhaled anesthetic agent जिसके पास क्लोरीन नहीं है. ठीक है, अब इनका इंपॉर्टेंस देखते हैं कि why do they have these substituents in their structure. ठीक है, तो सबसे पहली बात ये लिखो कि ये जो डाइथाइल ईथर है ना, उसका यूज हैज बीन स्टॉप्ड. ओके, इट इज नॉट यूज. वो सबसे पहले यूज किया गया था डाइइथाइल ईथर, बट अभी उसको यूज नहीं करते क्योंकि a better agent has been invented instead of the diethyl ether. Okay, अच्छा, can you all tell me one thing? अगर मेरा एनेस्थेटिक एजेंट मेरे ब्लड में ज्यादा सोल्यूबल हो रहा है,
ओके, सो जो मेरा जनरल एनेस्थेटिक का डोज है वो ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा इन मैम ऑर्डर टू कम ब्रिंग? लगेगा। कम लगेगा। कम कम। ब्लड में ज्यादा सोल्यूबल है। मैम अगर ब्लड में ज्यादा सोल्यूबल है तो फिर वो ज्यादा इफेक्ट होगा ना उसका, और ज्यादा देर तक रहेगा। ओके, एंड व्हाट इफ आई नीड दैट एनेस्थेटिक एजेंट टू रीच टू द टिश्यू, जैसे मैंने लिपिड थ्योरी में कहा था? वो तो उसका आयोनाइजेशन स्टेट पे डिपेंड करेगा ना कि कितना आयोनाइज हो वही। रहा है कितना अनआयोनाइज हो रहा Okay. So there is this one thing that we need to know regarding general anesthetic agent. If the solubility in blood is more, please write down. If the solubility in blood is more dose of, or rather higher dose of general anesthetic agent is needed. I'll explain you why. ठीक है? Write down one more point. Methoxy. Okay, methoxy का chemical name क्या होगा गाइस? कौन सा स्ट्रक्चर होगा methoxy? बोलो. आई डिडंट गेट द क्वेश्चन मैम। मिथॉक्सी, आई आस्क्ड कि मिथॉक्सी को हम कैसे सिंबलाइज करते हैं, विच इज OCH3. ठीक है, तो राइट डाउन मिथॉक्सी, एरो पे लिखो मोर सोल्यूबल इन ब्लड, एरो, नेक्स्ट पॉइंट, मोर इंडक्शन टाइम, मैं यूजुअली ये सब ऐसे हिंदी में लिखवाती हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड मोर. वो ज्यादा कम जो लिखा रहता है ना, तो यू अंडरस्टैंड मोर. ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन यू समथिंग. ठीक है, I have a drug which is a general anesthetic agent, okay, and I need it to go to the tissue. ठीक है, बट बीच में एक बैरियर है which is blood. अब ब्लड ना हमारा एक ट्रांसपोर्टिंग मैकेनिज्म है. ओके, एक ब्लड ही है जो हमको ऐसे वाटरवे से हमारे ड्रग को टिश्यू तक लेके जाएगा. ठीक है, तो जो ब्लड है हमारा पानी है, and general anesthetic agent is one of the what do I say, passenger. It has to go to the tissue. अब ब्लड क्या कर रहा है, अगर माय ड्रग इज मोर सोल्यूबल इन ब्लड तो वो ज्यादा टाइम लगाएगा टिश्यू तक पहुंचने के लिए. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. अगर वो सोल्यूबलाइज हो गया ब्लड में तो वो ब्लड में ज्यादा टाइम तक रहेगा. ओके, वो टिश्यूज तक स्लो पहुंचेगा मेरा पर्टिकुलर एनेस्थेटिक एजेंट. However, if my general anesthetic drug is less soluble in the drug, it will be reaching the tissues faster. Do you understand this point? है। यस। Okay. So, in case of methoxy, methoxy is more soluble in blood. That is the reason वो ब्लड में ज्यादा टाइम तक रहेगा, एंड जो उसका इंडक्शन टाइम है वो ज्यादा रहेगा. मतलब अगर मिथॉक्सी को 5 मिनट लग रहा है जनरल एनेस्थेटिक एक्शन इंड्यूस करने को, ऑन द अदर हैंड जो मेरा कम सोल्यूबल ड्रग है दैट इज नाइट्रस ऑक्साइड, वो कम सोल्यूबल है ना, तो उसका इंडक्शन टाइम इज रैपिड. मतलब वो 10 सेकेंड में ही मुझे जनरल एनेस्थेटिक एक्शन दिखाएगा. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट. यस मैम। यस, एनी डाउट? कितने पार्टिसिपेंट्स आई हैव टू गो टू द मैम I will explain again if you don't understand. Okay. यस मैम प्लीज। Okay. Yeah, I have a particular drug. Okay. अगर वो ब्लड में solubilize हो गया, which is methoxy. Example is methoxyflurane. उसका induction time to the tissues is more. Why is it more? Because क्योंकि वो ब्लड में ज्यादा soluble है ना, वो टिश्यूज तक पहुंचने के लिए ज्यादा टाइम लगा रहा है. तो लिपिड थ्योरी कम्स इनटू पिक्चर. ओके, लिपिड थ्योरी ने क्या कहा था?
it will depend, the anesthetic action will always depend on the number of molecules which is present at the tissue site. Okay, क्योंकि हमारा drug is more soluble in blood, उतना ज्यादा drug is not available at the tissues to cause general anesthetic action. तो अगर methoxy जो ज्यादा soluble है, it is taking 5 minutes. Nitrous oxide जो कम soluble है, it is taking only 10 seconds for inducing the general anesthetic action. I hope you all are understanding. Yes, ma'am. Okay. So these were the 2 points that you all needed to remember. सबसे पहले तो इसमें से ईथर सिर्फ हैलोथेन को छोड़ के सब लोग है. फिर कॉमन स्ट्रक्चर एनफ्लोरेन, आइसोफ्लोरेन, डेस्फ्लोरेन का है. नेक्स्ट मेथॉक्सीफ्लोरेन इज मोर soluble in blood, that is why it has more induction time. नाइट्रस ऑक्साइड का solubility कम है, इसीलिए it has rapid induction. Next point, halothane और isoflurane is combined with these fluorane. ठीक है, these are never given alone, they are always combined with nitrous oxide. Okay, why nitrous oxide? Because nitrous oxide is less soluble in the blood, it has rapid induction time. ठीक है, समझ रहे हो? Yes. हम दो गैसेस एक साथ एडमिनिस्टर करते हैं बॉडी में. ओके, all of their significance is dependent upon volume expansion, pressure gradient, concentration gradient, partial pressure. बहुत सारे चीजें come into picture. Okay, now since you all मैम are इन सबको इनहेल करेंगे. yes, and how are they inhaled? Do you know that inhaler जो लगाते हैं पेशेंट को? यस मैम. मास्क. Okay, Nebulizer. yes. So remember, मैंने कहा कि हम इसको को एडमिनिस्टर करते हैं हमेशा. ओके, so an effect comes into picture when we study general anesthetic, that is second gas effect. ठीक है, मैंने आपको सल्यूबलाइजिंग का मतलब बता दिया कि N2O कम सल्यूबल है, जल्दी एक्शन दिखाएगा, एंड मेथॉक्सी ज्यादा सल्यूबल है तो थोड़ा लेट इफेक्ट दिखाएगा. ओके, सो व्हेन वी आर एडमिनिस्टरिंग टू गैसेस एट द सेम टाइम, ओके, एक गैस ने पहले बॉडी में जाके टिश्यू में जाके अपना एक्शन दिखाया, उसके बाद ना सेकेंड गैस इज ऑन द वे. ठीक है, वो थोड़ा ब्लड में घुल मिल रहा है, एंड देन इट विल गो टू द टिश्यूज, but it will show its effect. Okay, so I'll say something now. So first soluble gas, that is N2O, it is delivered in high inspired concentration. ठीक है, सबसे पहले N2O जाके हमारे alveoli पे जाएगा, उसकी कैपिलरी तक पहुंचेगा, वहां पर उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएगा. ओके, नेक्स्ट what will happen? पीछे से we are giving this एनफ्लोरेन, आइसोफ्लोरेन, डेस्फ्लोरेन. इनका solubility भले कम है ब्लड में, बट क्योंकि नाइट्रस ऑक्साइड ने सब कुछ स्टेबलाइज कर दिया है ना पूरे सिस्टम को, तो these will go and have the inducing effect after N2O. So that is called as second gas effect. पहले गैस ने अपना काम कर दिया, it has stabilized all the pathways that we have covered in the previous slide, that is alveoli, tissues, brain and everything, and then the second gas comes into picture. Okay, when you see this points and words ना तो और ज्यादा clear होगा second gas effect क्या होता है. Okay, now write the other point. हम जितना ज्यादा कार्बन हैलोजन बॉन्ड्स बढ़ाएंगे, लिखो increase in carbon halogen bonds will lead to increase in non-inflammability and volatility. तो जितना ज्यादा कार्बन हैलोजन बॉन्ड होगा वो उतना ज्यादा नॉन फ्लेमेबल होगा और उतना ही ज्यादा वोलेटाइल होगा.
सो इज इट गुड और बैड? वॉलेटिलिटी रहना चाहिए जनरल एनेस्थेटिक्स में कि नहीं? बोलो। Yes. Should these agents be volatile or not? Yes, ma'am. Very good. तो कार्बन हैलोजन बॉन्ड्स क्यों? पहले सिर्फ डाइइथाइल ईथर था. ओके, इट हैड कार्बन एंड हाइड्रोजन. So the reason they have stopped using diethyl ether was it was less volatile. It caused burning effect. Okay, ये flammable था diethyl ether. तो न्यूअर ड्रग्स उन्होंने ऐसे बनाए जिनके पास कार्बन हैलोजन बॉन्ड्स बढ़ा दिए. ओके, it increased the non flammability actions as well as the volatility. Okay, so these were the reasons of मैम developing inhaled anesthetic. मैम Yes. इनहेल कर रहे इसीलिए वोलेटिलिटी ज्यादा रहना चाहिए, राइट? Yes. So that is why they have added these halogens in the structure. Okay. अगर पूछा कि ये halogens डालने से क्या हुआ, what was the effect of adding these halogens? The reason is it increased the non-flammability and increased the volatility of these structures. Okay. जरूरी नहीं है कि अगर कोई गैस है तो उसका वोलेटिलिटी ऐसे ही बढ़ जाएगा. वो हैलोजन डालने से उसका वोलेटिलिटी बढ़ा है. ओके, कैन यू सी यहाँ पे कितने हैलोजन है? सीवोफ्लोरीन में कितने हैलोजन है? ओके, इट इज डिफरेंट. कहीं कहीं कार्बन एंड फ्लोरीन है, कहीं कहीं कार्बन एंड क्लोरीन है. ओके, दे हैव डेवलप्ड सच डिफरेंट डेरिवेटिव. ऑब्वियसली यू कांट रिमेम्बर ऑल द स्ट्रक्चर्स, बट जितना याद हो रहा है उतना ठीक है. जस्ट नो द सिग्निफिकेंस की हैलोजन डालने से क्या हुआ, ईथर फॉर्म में था तो क्या हुआ, कौन सा ईथर फॉर्म में नहीं है. ओके, can I go to the next slide? Have you understood every point regarding inhaled anesthetic? यस मैम. Okay. ये लोड क्यों नहीं हो रहा? All right. So this is all the actions that they do. Okay, the inhaled anesthetic. They will depress the CNS, depress the respiration and response to CO2. इसीलिए ना जब भी सर्जरी होता है एक्सटर्नली दे विल प्रोवाइड यू विद ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, देन depression of renal blood flow and urine output. High enough concentrations will relax the skeletal muscle. याद रखो skeletal muscles are relaxed. Pharmacokinetics देखते हैं of inhaled anesthetic. Partial pressure जैसे मैंने कहा, the partial pressure of the anesthetics is the in the inspired gas. ठीक है, partial pressure हमेशा किसके proportional होगा? To the concentration. And जितना ज्यादा हमने इंस्पायर किया, more of the general anesthetic is transferred in the blood. जितना ज्यादा डोज देंगे उतना जल्दी and faster the induction would be. ठीक है, next is pulmonary ventilation. What do you understand by this term? Ventilation क्या होता है? Transfer of fresh air and removal of toxic. Transfer of Fresh air, oxygen. fresh air. Okay. So, do you remember that pathway? यहाँ पे alveoli था. ठीक है, यहाँ से it was going to some tissue. Okay, यहाँ से it was going to some brain. If you remember that pathway correctly. ठीक है, तो pulmonary ventilation मतलब pulmonary मतलब lungs. So we have our lungs over here. Ventilation का मतलब
if my general anesthetic agent is reaching from nose to this alveoli, ventilation का मतलब क्या होगा guys? कितना particle has been ventilated from alveoli to the tissues. ठीक है, समझ रहे हो? Yes. Next, it governs the delivery of the, it always depends कि हमारा जो पाथवे है वो फॉलो हो रहा है या नहीं. एल्वियोलाई से वो टिश्यूज में ही जाना चाहिए. अगर एल्वियोलाई से इट इज गोइंग टू द ब्लड, इट इज डाइवर्टिंग द पाथ ऑफ माय जनरल एनेस्थेटिक एजेंट. उतना ज्यादा टाइम लगेगा जनरल एनेस्थेटिक इफेक्ट के लिए, दैट इज इंडक्शन के लिए. ओके, तो हमेशा पल्मोनरी वेंटिलेशन is coming into picture and it is governing the delivery of general anesthetic agent. Okay, so partial pressure, pulmonary ventilation is important. Next is solubility, जो मैंने आपसे कहा. I hope you understand these 2 points. जिसके पास high blood solubility है, example is methoxy, slow induction and recovery. Recovery का क्या मतलब होगा guys? Coming back to normal state. Correct. आपने जब भी पाथवे देखा था ना वो स्लाइड में, इट हैड एरोज व्हिच वर टू वेज. एक था रेड व्हिच वाज गोइंग टू द टिश्यूज, एक था ब्लू व्हिच वाज गोइंग अवे फ्रॉम द टिश्यूज. ओके, रिमेंबर दीज आर इन gaseous form. Okay, so while coming back also, the patient regain their consciousness when the whole gas is out of their system. Okay, so slow induction and recovery, and GAs with low blood solubility, the example was N2O, rapid induction and recovery. ठीक है, तो जितना जल्दी वो लोग हमको बेहोश करेंगे उतना जल्दी they will cause the regaining of consciousness. ठीक है, I hope you all are understanding these terms. Do you understand this second point? The more soluble a general anesthetic agent is in the blood, the more agent must be dissolved to raise its partial pressure. Okay. Next point, for a very soluble agent, the partial pressure rises slowly. Okay, because it is more soluble in the blood. Example is methoxyflurane. Okay. And next is nitrous oxide. तो अगर दो examples दिया, nitrous oxide and methoxyflurane, you should know कि किसका induction time कम है, किसका induction time ज्यादा है, किसका solubility कम है, किसका solubility ज्यादा है. They ask you this in the form of 4 statements. Okay, they will say कि choose the correct statement from the following or choose the incorrect statement from the following. So you should read them properly and carefully. Okay, ऐसे questions आते हैं. So moving ahead. Okay, next is हाँ, ये याद रखो हमेशा ना जो हमारे जनरल एनेस्थेटिक एजेंट्स है, सबसे पहले ना वो लोग ऐसे टिश्यूज पे जाके बाइंड करेंगे विच आर हाईली परफ्यूज्ड. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय परफ्यूज्ड? बोलो. More blood vessels. करेक्ट. तो सबसे पहले वो लोग हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन्स विच इज हार्ट, आवर ब्रेन, ओके, आवर एक्सट्रीमिटीज, सबसे पहले वहां पे जाएंगे वो लोग. नेक्स्ट the next in the line are the adipose tissues. ठीक है, जहाँ पे ज्यादा फैट्स होते हैं. So after the highly perfused organs, that is liver, lungs, kidney and everywhere, they will go to the adipose tissue which are less perfused. ठीक है, तो एक ही ड्रग है पूरे एनेस्थेटिक्स में जो adipose tissue पे जाता है. Okay, we will cover that further. तो याद रखना ये adipose tissue पर एक ही ड्रग जाता है. Okay, we will name it in the further slide. So amount that reaches the brain, it is indicated by oil is to gas ratio. वो हमने देख लिया. Lipid solubility, high lipid solubility tends to delayed recovery. Yeah, अगर lipid solubility ज्यादा है मतलब adipose tissue में हमारा ड्रग रह गया तो delayed recovery होगा. The patient, if they are obese, no, it happens in them. Okay, if there is high lipid solubility, there is delayed recovery. CO2 inhalation causes cerebral vasodilatation. Faster induction as well as recovery occurs.
इसीलिए after surgery they have to monitor the carbon dioxide and oxygen levels in the patient. Okay, respiratory effects भी होते हैं. So all these points you all are going to study during pharmacology. Okay, so let's move ahead. बहुत कुछ होता है ड्यूरिंग सर्जरी, ठीक है. हाइपोथर्मिया, उनका टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर बढ़ता है. देन लेट्स रीड अबाउट ईच एंड एवरी ड्रग नाउ, ठीक है. तो वी हैव नाइट्रस ऑक्साइड. मैंने मेजर पॉइंट्स जो है आई विल ट्राई टू कवर देम. ओके, सो वी ऑलरेडी नो it is used for the rapid induction and recovery. Okay, next point, second gas effect. So nitrous oxide is less potent and it is administered in higher volume. ठीक है. जैसे मैंने आपको बताया कि these have carbon halogen bonds in their structure. Okay, so remember halogen species are really dangerous, detrimental to human life. Okay, they will form the radicals which are not good for the body. Okay, वो radicals जो है ना अपने tissues पर जाके, अपने bodies पर जाके accumulate हो जाते हैं. Okay, so because we know this fact, they are given in really small amounts. इसीलिए nitrous oxide का dose ज्यादा होता है हमेशा, याद रखना है इसको. So what happens is nitrous oxide is less potent and hence is administered in higher volume. Okay, can you all see the slide? No, ma'am. No, ma'am. Wait a second. Okay, now can you all see it? दिख रहा है? Yes. Okay, so nitrous oxide is less potent, ठीक है, and hence is administered in high volume. एक और बात है कि it is less potent as well as less toxic. Okay, इसीलिए उसको ज्यादा quantities में देना allowed है, along with a more potent gas which is halothane. तो जिसका potency ज्यादा है that is halothane which is not an ether, उसका quantity देखो 1:2%. Then we have this second gas effect. क्या होता है? N2O इसका induction time बहुत कम है, it rapidly diffuses, whereas halothane or isoflurane diffuses poorly into the blood. See the pathway? Alveoli, blood, then brain. ठीक है. So when these are administered simultaneously, क्योंकि N2O ने अपना जगह बना लिया है, क्लियर कर दिया है सारे pathway from alveoli to the brain, these people also, that is halothanes and isoflurane, also enters the blood rapidly along with rapidly diffusible gas that is N2O. I hope now you understand the second gas effect. Okay, because of N2O they are able to travel faster. The less potent ones, sorry, the more potent ones are able to travel faster because of N2O. Okay, so this was second gas effect. एक गैस की वजह से दूसरा गैस भी उसका रास्ता क्लियर हो गया. ओके, नेक्स्ट इज डिफ्यूजन हाइपोक्सिया. सो एट द एंड ऑफ एनेस्थेसिया, ओके, ये एंड स्टेज पर हो रहा है. सो एट द एंड ऑफ एनेस्थेसिया व्हेन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ N2O ceases, जब हमने N2O देना बंद कर दिया है, ओके, N2O क्या करेगा? अब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट काम करता है. ओके, अब ब्रेन में एंड टिश्यूज में हमारा N2O ज्यादा है. नाउ व्हाट विल हैपन? नाउ एक्सटर्नली आई एम स्टॉपिंग दिस नेबुलाइजर, N2O मैं नहीं दे रही हूँ. सो व्हाट विल हैपन? टिश्यूज से N2O विल कम बैक टू द alveoli. What happens then? Nitrous oxide has low blood solubility. So when the administration of N2O is discontinued, it rapidly diffuses from the blood into alveoli and causes marked reduction of partial pressure of oxygen. Okay, ये PaO2 is partial pressure of oxygen. What happens then? There is hypoxia. मतलब क्या?
reduction in oxygen. That is the reason after surgeries 100% oxygen is given for few minutes. याद रखो इसको, okay? Diffusion hypoxia can be avoided by giving 100% oxygen for a few minutes immediately after N2O is discontinued. इसमें ना इस चैप्टर में SAR कुछ भी नहीं है, सिर्फ सिग्निफिकेंस जानना है कि हैलोजन लगाने से क्या हुआ एंड सेकेंड गैस इफेक्ट क्या होता है, डिफ्यूजन हाइपोक्सिया क्या होता है. ओके, सो नेक्स्ट ड्रग दैट इज डाइएथाइल ईथर. इट इज हाईली एक्सप्लोसिव, इसीलिए इट वाज डिसकंटिन्यूड. एंड लेट मी टेल यू, लैब लेवल पे ना, when let me give the live example. When we sacrifice or when we euthanize a rat in our department, in our college, okay, so we use diethyl ether. Okay, we make the rat smell this diethyl ether and they are suffering a painless death. Okay, there's no incision given beforehand. We make them smell this, inhale this, and that is how we euthanize the animals. Okay, so for animals these are used, for human this is not used, diethyl ether. Only point to remember is it is highly explosive. Okay, next slide. We have is halothane. So याद रखो, it is a widely used agent. It is non-explosive because it has carbon halogen bonds. Okay, non-irritant भी है वो. We have halogenated volatile anesthetic. Okay, then the carbon halogen bonds, as I've already mentioned, it is non-flammable, volatile, high lipid solubility. I would not suggest कि तुम लोग ये maintenance and induction याद रखो. However, जितने भी anesthetic तुम पढ़ोगे उधर पर लिखा ही होगा कि this percent induction and this percent maintenance, not needed. ठीक है, जो भी मैंने रेड में लिखा है it is the adverse effect. याद रख सकते हो तो रखो, वरना जाने. Next point. Yeah, as I mentioned, since these have halogens, okay, so what do? They will form the radicals. ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो हेपेटोटॉक्सिसिटी, फ्लोराइड आयन टॉक्सिसिटी. इसके पास फ्लोरीन देखो कितना है, 3 फ्लोरीन है. आई सेड ऑल, आई मेंशन्ड कि इनके मेटाबॉलिज्म में ना दे विल फॉर्म रेडिकल्स, फ्लोराइड रेडिकल्स बनाएंगे. ठीक है, सो दीज रेडिकल्स गो एंड अक्यूमुलेट ऑन द लिवर एंड किडनी एंड दैट इज हाउ दे कॉज हेपेटोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी. सो ये सारे प्रॉब्लम्स है, इसीलिए इनको बहुत कम अमाउंट्स में देते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड को ज्यादा अमाउंट में देते हैं. ओके, ये पढ़ो ना this point. What is phosgene, guys? Chloroform, when kept in direct sunlight, it converts to a toxic compound, which is phosgene. Okay, do you know where what is it used? Any history of phosgene? याद है कुछ भी? No, man, it's नहीं याद. Okay, so phosgene has a suffocating odor. Okay, phosgene is also called as war gas. It was used in World War One. ठीक है, World War One में use हुआ था phosgene. It is also called as mustard gas, and it is believed that World War One में 85% deaths was because of phosgene. ठीक है, so halothane, this drug, it undergoes oxidative decomposition, ठीक है, to hydrochloric acid, hydrobromic acid and phosgene. ठीक है, so इसका oxidative decomposition ना हो इसलिए storage लगता है and it is really harmful, but in order to use it in some amount it is acceptable. समझ रहे हो? Okay, so write down halothane on oxidative decomposition. It forms HCl, HBr and phosgene. Hence,
stored in dark amber colored bottle. ठीक है, moving ahead. Enflurane, ये जो मैंने रेड में लिखा है ना, आई होप यू आर कीपिंग एन आई ऑन देम. ठीक है, सो ई से याद रखो, एनफ्लुरेन इट हैज risk of epilepsy like seizures. Enflurane, E and E, they are common. Next we have isoflurane. It lacks the epileptogenic property. Okay, kabhi kabhi in what do I say, administer करने के बाद the patient might feel epileptic. ठीक है, उनको seizures आ सकते हैं. So these cases were seen to be lessened, or they weren't seen when isoflurane was administered. ठीक है, तो E से याद रखो, एनफ्लुरेन एपिलेप्सी, आइसोफ्लुरेन में लैक एपिलेप्टोजेनिक प्रॉपर्टी. ठीक है, अगेन आई वुड से नो नीड टू रिमेम्बर द स्ट्रक्चर, बट उनका सिग्निफिकेंस क्या है वो देखते रहो. सो दीज आर द मेटाबोलाइट्स आई मेंशनड. ऑब्वियसली सबका स्ट्रक्चर याद नहीं रखना है. एट द एंड सारे ही फ्लोराइड रेडिकल्स एंड क्लोराइड रेडिकल्स वो सब बना रहे. ओके, the metabolic route is not important. They all form toxic degradation products. Okay, उनका chemical stability बहुत कम है. Have you heard trifluoroacetic acid? So in just write down for halothane. This is important. Halothane के लिए लिखो, it forms trifluoroacetyl halide. Halothane forms trifluoroacetyl halide which initiates hepatitis. Okay, तो H halothane, the problem is hepatotoxicity, H and H. Enflurane, the problem is epilepsy, E and E. That is how you remember them. Okay, बहुत इजी है ये चैप्टर, कुछ भी नहीं है, स्ट्रक्चर्स याद ही नहीं रखने. Desflurane, it forms this trifluoroacetic acid. It also causes hepato and nephrotoxicity. ठीक है, hepatotoxicity and nephrotoxicity. So यही सब प्रॉब्लम्स है इनके मेटाबोलाइट्स का, जनरल एनेस्थेटिक्स के. Then we have isoflurane, same problem. At the end वो trifluoroacetic acid ही बना रहा है. Hepatotoxicity is the issue. Methoxyflurane के लिए लिखो, it causes more of renal toxicity. Methoxyflurane causes renal toxicity because can you see this fluoride ion? These are formed in excess, इसीलिए renal toxicity हो रहा है. So ऐसे थोड़ा थोड़ा जो है वो याद रख लो. Okay. Do you know hepatotoxicity में क्या होता है? सिर्फ आयंस एक्यूमुलेट हो रहे हैं, उसके बाद एक प्रोसेस होता है, okay, which causes this toxicity. So let me tell you what happens exactly. Okay. So ये जो फ्लोराइड आयंस है ना, वो एक्सक्रीट नहीं होते बॉडी से जल्दी, and these are the free radicals, no? So they will accumulate at the liver tissue. Okay. अब कुछ accumulate अगर हो रहा है, so do you know the antigen antibody mechanism? अगर हमारे बॉडी में कोई एंटीजन आ गया, okay, our immune system will automatically start producing antibodies against it. So what happens is, अगर हमारे लिवर पर कोई फ्लोराइड आयन या फिर कोई क्लोराइड आयन आके बैठ गया, कोई accumulate कर रहा है, our tissue itself will start producing antibodies. Okay,
they will think कि ये fluoride कोई antigen है. So that is how this is caused. Okay, this hepatotoxicity, nephrotoxicity, ये सब क्यों होता है? Because of the accumulation of the iron. I hope you all are understanding the metabolites, the problems that are caused because of these agents. सब कुछ बहुत easy है. Okay, this is for your reference for summary. Yeah. किसी को doubt है अभी तक with respect to the inhalational ones? Yes, we have to revise it, guys. बोलो. Any doubt अब तक जो cover किया है? No, ma'am. No, No, ma'am. ma'am. कौन रिवाइज करेगा? जल्दी जल्दी, हाँ, मतलब कुछ भी कवर नहीं किया है हमने, स्ट्रक्चर तो था ही नहीं. somebody unmute and revise the inhalational one जल्दी से. अरे यार तुम लोग ना ऐसे ऐप स्विच करवाते हो. बोलो. we have only 4 students today. Yeah, कर दो कोई भी, जल्दी से रिवाइज कर दो. मैम you again today. अभी I am कोई happy नहीं that कर रहा you. ए यार बाकी लोग करो फटाफट रिवाइज. देवेश कर दो आज. Okay, ma'am. Fine. Yeah. So first we saw lipid theory, which is mere overturn correlation, Hmm. which is closely related to lipid solubility. Then we saw it states that the number of molecules dissolved at the site of anesthetic action. Hello. Okay. Yes, we are able to hear you. बोलो. Okay, and then we saw volume expansion, like a general anesthetic interact with hydrophobic portion of the membrane and cause bloating of the membrane. Hmm. Then we saw protein receptor theory. Anesthetic can bind to protein as well as lipid. They interact with functional membrane proteins. They inhibit the function of excitatory receptor like glutamate receptor, NMDA receptor, inhibit neuronal Okay. cation channel gated nicotinic receptor, enhance the function of inhibitory receptor like GABA and glycine in spinal cord and medulla. Then we saw the agent and mechanism of action, tabular form. Then we Hmm. saw the classification, which was inhalational and parenteral. In inhalational, we have volatile liquids and gas, and in parenterals, we have inducing and slow acting. In inhalational, gas contains nitrous oxide, and volatile liquids contain ether, halogen, isoflurane, desflurane, and sevoflurane. Then we saw the structures of inhaled anesthetics. In that we saw uh, methoxy is more soluble in blood, so more induction time takes place. More carbon halogen bonds will lead to increase in non-inflammability and volatility. Hmm. Next, we saw general action of inhaled anesthetics like CNS, depression of CNS, inspiration, depressed respiration in response to CO2. So we provide external oxygen to the patient. In kidney, depression of renal blood flow and urine output. In muscle, high enough contraction and relaxation of skeletons. We saw pharmacokinetics like partial anesthetic in inspired gas. It is proportional to the concentration of the inspired gas mixture. Higher the inspired tension, more of general anesthetic is transferred into the blood and faster induction will take place. Pulmonary ventilation governs delivery of a general anesthetic to alveoli.
And solubility of a general anesthetic into blood with high blood solubility, slow induction and recovery. Example, ether. And with a low blood solubility, rapid induction and recovery. Example, N2O and desflurane. The more soluble a general anesthetic agent in the blood, more agent must be dissolved to raise his partial pressure, means more drug concentration is given. For a very soluble agent, the partial pressure rises slowly. Example, methoxyflurane and nitrous oxide. Uh, Solubility of general anesthetic into other tissues like adipose. Alveolar exchange, we saw gases diffuse freely across the alveoli. Alveolar ventilation and perfusion should be matched. And amount that reaches the brain, indicated by oil and gas ratio, lipid solubility. High lipid solubility tends to delayed recovery. And CO2 inhalation causes cerebral vasodilation, faster induction as well as recovery. Then we saw respiratory effects. Airway maintenance is essential as general anesthetic reduce or eliminate both ventilatory drive and reflexes that maintain airway patency. Ventilation must be assisted or controlled for at least some period during surgery. Then we saw hypothermia, like a patient commonly develop hypothermia, body temperature below 36 during surgery, and then we started with the drugs, which first was nitrous oxide, which is non-irritating, good analgesic properties, and shows second gas effect, which leads to diffusion hypoxia. Low potency, minimum alveolar concentration is 105%. Uh, and then we saw inhaled gas, other drug, which was ether, which is highly explosive, easy to administer and control, highly soluble in blood. Then we saw halothane, widely used agent, non-explosive and non-irritant, halogenated volatile anesthetic that is usually mixed with air and oxygen. The carbon halogen bonds contributes to its non-flammability and volatility, and high lipid solubility, blood gas partition coefficient. Okay. And then we saw above enflurane, which is similar to halothane, less risk of toxicity and shows epilepsy-like seizures. And of isoflurane, lacks epileptogenic property. Yes, and then we saw the metabolites of the fluorinated anesthetics. Yes. All right. So thank you, Devesh. Now, parenterals. ठीक है. Major portion was inhalational anesthetic. अभी parenterals देखते हैं. Okay. So in parenterals we have inducing drugs and slow acting drugs. Inducing drugs कौन से रहेंगे? जो induction जिनका time बहुत ही कम होगा. They will have rapid induction, and slow acting drugs will be responsible for the maintenance. ठीक है? Okay. Okay. So we have intravenous anesthetics, which are used in combination with inhaled anesthetics. Okay, why are we using them? Because there are few negative points or drawbacks of the inhalational anesthetic. What are they? क्या क्या problem है? They will maintain, first of all, then provide sedation, control the blood pressure. As आपने देखा था, मैंने red में लिखा था वहां पर hypotension या फिर decrease blood pressure, वो सब point. And they also protect the brain. And most commonly, these intravenous anesthetics are used for the induction of anesthesia. Okay. These are small hydrophobic substituted aromatic or heterocyclic compounds. And here, in case of
intravenous anesthetic, hydrophobicity is the key factor. Okay, तो इनका ये सब काम है. So what happens is, after a single IV bolus, what do they do? These drugs preferentially partition into highly perfused and lipophilic tissues of the brain and the spinal cord where they produce anesthesia. ठीक है, हमारे जो gases है ना वो हर जगह पहुंच नहीं पाते, इसीलिए as an adjuvant we can say, or as a co-administered drug, these are given. Subsequently, the blood levels fall rapidly. Drug redistribution out of the CNS back into the blood occurs. Okay, the anesthetic then diffuses into the less perfused tissues. सबसे पहले highly perfused tissues पे जाएंगे, then to the less perfused tissues such as muscles, and at a slower rate into the poorly perfused like the adipose tissue. ठीक है? So the intravenous anesthetics that I used are thiopental, etomidate, and propofol. ठीक है? What do they do? All act within 20 to 30 seconds if given intravenously. Okay, so that is the plus point of using intravenous anesthetic. तो प्रोपोफॉल का स्ट्रक्चर देखो. बाय द वे ये क्वेश्चन आया था. ओके, क्या था क्वेश्चन? कायरल सेंटर्स आई गेस पूछे थे. द कायरल सेंटर्स और समथिंग IUPAC नेम ऑफ प्रोपोफॉल. ठीक है, तो हाउ डू यू राइट प्रोपोफॉल? फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले फिनॉल लिखोगे एंड देन दोनों ऑर्थो पोजीशंस पर यू विल राइट द आइसोप्रोपाइल ग्रुप. ठीक है, so that is how you write propofol. I guess IUPAC पूछा था या फिर chirality. Okay, so the most commonly used parenteral anesthetic is propofol. The structure is phenol with 2 isopropyl groups. आपको ये सारे का क्या क्या याद रखना है वो याद रखो. Mechanism of action. ठीक है, what is it doing? गाबा. गाबा क्या है? इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर. तो प्रोपोफॉल क्या करेगा? उसको एनहांस करेगा. अगर कोई एक्साइटेटरी पे काम करता होता तो उसको इनहिबिट करेंगे, बट गाबा है यहाँ पे तो इट विल एक्ट वाया एनहांसिंग द गाबार्जिक न्यूरोट्रांसमिशन. ठीक है, सिर्फ इतना ही याद रखना है स्लाइड पर से. इंडक्शन टाइम देखो 15 to 45 सेकेंड. मूव अहेड. प्रोपोफॉल के लिए इतना याद रखना. ये भी याद रखो, इसका नाम जनरल नेम और ब्रांड नेम इज डिप्रीवैन. ओके, मूव अहेड. So these are the Yes. points that no irritation. Yes, somebody saying something? No. Okay, so this is important that propofol is used in asthmatic. Okay, it is suitable for use in asthmatic. It has anti-emetic effect and these problems are rare, that is post-operative nausea and vomiting. ठीक है, it is used in status epilepticus. अगर एन्फ्लुरेन की वजह से एपिलेप्सी हुआ तो प्रोपोफॉल देंगे, it will go off. ओके, उधर जो प्रॉब्लम्स हो रहे थे यहाँ पर उसका सोल्यूशन. So we have this propofol के बारे में. It is a popular rapid acting preferred for operative surgical procedures and it causes fall, FOL, that is fall in blood pressure. अगर hypertension हुआ, ये सारे problems हुए, status epilepticus. तुमको पता है वैसे questions आता है, if a patient there was this year-old patient and he is going under surgery, he is facing such problems, which of the following general anesthetic agent would you give? Okay, तो अगर वहां पे दिखा उसको epilepsy हो रहा है, there is increase in blood pressure of the patient, so this is the preferred general anesthesia that you will give. Okay, it will cause fall in BP. It is used during asthmatics. It is used in asthmatic patients. It has anti-emetic effect. And next is status epileptic. ठीक है, 4 points है regarding propofol. Surgical procedure. Sorry, Popular rapid acting preferred for OP surgical procedures. operative जो ऑपरेशन होता है ना, उन्होंने सिर्फ उसको यूज किया है प्रोपोफॉल को
to form a mnemonic. Okay, Okay. यहाँ पे OP is not overpowered. Okay, याद रखना, operative ऐसे याद रखो. Moving ahead, we have this isomer of propofol. Sorry, not an isomer. इसको हमने प्रोड्रग बनाया है जिसका नाम है फॉस प्रोपोफॉल. ठीक है, ये जो प्रोपोफॉल था, same structure, instead of OH, that is phenol, they have added a phosphate group over here. Can you see? They have made it in ester form, the phosphate ester. यहाँ पर इस point पर. Okay, it is similar to propofol. It is hydrolyzed by phosphatases. ठीक है. तो इसका इंडक्शन टाइम थोड़ा सा ज्यादा है, बट ये थोड़ा स्टेबल है. इसको फॉस्फेट फॉर्म में क्यों बनाया है? बिकॉज इट इज मोर स्टेबल. वो जो प्रोपोफॉल है वो डायरेक्टली मेटाबॉलिज्म शुरू करेगा आफ्टर आईवी. दिस विल टेक टाइम इसको, क्योंकि हाइड्रोलाइज होना पड़ेगा पहले. ओके, सो ड्यू टू इट्स रिक्वायरमेंट फॉर कन्वर्जन टू द एक्टिव प्रोपोफॉल, द ऑनसेट ऑफ फॉस प्रोपोफॉल इज डिलेड. ओके, मूविंग अहेड. नेक्स्ट ड्रग, मैंने आपको बताया था एडिपोज टिश्यू. यस, सो दिस इज दैट ड्रग. ओके, so thiopental is the drug which is ultra short acting barbiturate. सबसे पहले ये याद रखो कि it is an ultra short acting barbiturate. It is thiopental. Okay, 5 carbon structure is यहाँ पर ऊपर ये वाला, that is why pental. सल्फर है इसीलिए थायो ग्रुप. ठीक है, so what happens is initially it induces anesthesia which then can be maintained during the surgical procedure with this agent. Okay, and the induction typically is very rapid and pleasant. Next point to remember is it has rapid action because of rapid transfer across the blood-brain barrier. So it is an ultra short acting, rapid action दिखाता है. Okay. Next point is in the next slide. That is, after a single IV dose, thiopental rapidly enters the highly perfused organs like brain, liver and heart. ठीक है, उसके बाद देखो, as the blood level of the drug falls rapidly, it diffuses out of the CNS into the blood and then to the less perfused organs like the adipose tissue. ये फीचर आपको कोई भी दूसरे ड्रग में देखने को नहीं मिलेगा. Okay, so after thiopental has reached the brain and highly perfused one, वहां से it is removed, comes back to the blood, वहां से इट गोज टू द एडिपोज टिश्यू. अगर वो एडिपोज टिश्यू में रह रहा है तो इट वुड बी स्टेइंग देयर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि यहाँ पे फैट्स है. ओके, वो ड्रग वहां पे एक्यूमुलेट हो जाता है. दैट इज व्हाई इट प्रोड्यूसेस अ लॉन्ग लास्टिंग हैंगओवर. ओके, so this is seen only in this case of thiopental. अच्छा, रिमेम्बर, जब ये जो ड्रग है it redistributes into these areas, no, less perfused one, that will mark its termination of drug action. Okay, थोड़े टाइम के लिए वो हैंगओवर रहेगा जब तक वो एडिपोज टिश्यू में है, उसके बाद the drug action will decline. So adipose tissue जो point था, it was okay. So these are the advantages of thiopental. इसका mechanism of action is more important. Okay, and remember it has a long lasting hangover. All right.
Nothing. Narco analysis in psychiatry. Okay. Next is etomidate. Which ring is this guy? इसका नाम बोलो. Pyrrole. Pyrazole. Pyrazole. So भाई साहब, नो. पायरोल किसने बोला? व्हाट इज दिस देन? इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? Pyro. और फिर इसका जो मैंने सर्कल किया है. Pyrazole. फाइंड आउट इटोमिडेट हैज विच रिंग. उसके अंदर वो न्यूक्लियस कौन सा है? Indole. Okay. इंडोल. आई डू नॉट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम बूस्टर बैच. मतलब वो जो 2025 वाले बैच है ना, वो लोगों को पता है कौन सा रिंग रहता है वो. ओके. तुम लोग फिगर आउट करो नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग्स, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आ गया ना, तो यू विल रिग्रेट नॉट मेमोराइजिंग द नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग्स एंड द नेम. ओके. एंड मैंने उधर लिखा है फर्स्ट लाइन में. यू आर नॉट रीडिंग द स्लाइड. फर्स्ट लाइन में ही लिखा है. Imidazole. Imidazole. ओके. सो इंडोल तो बहुत दूर दूर तक वो नहीं है, क्योंकि इंडोल का स्ट्रक्चर आप देखोगे ना, यू विल से हाउ कैन आई से दिस एज इंडोल. ओके. ठीक है. सो एस्टर ऑफ अ कार्बोक्सिलेटेड इमिडाजोल इज इटोमिडेट. ठीक है. इट इज अवेलेबल एज आर आइसोमर. देन छोटे छोटे पॉइंट्स ही याद रखना है. थायोपेंटाल वाज अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट. दिस इज शॉर्ट एक्टिंग हिप्नोटिक एजेंट. ठीक है. विदाउट एनाल्जेसिक एक्टिविटी. व्हाट इज इट यूज्ड फॉर? इंडक्शन ऑफ एनेस्थेसिया इन हीमोडायनामिकली अनस्टेबल पेशेंट्स. मतलब हीमोडायनामिकली अनस्टेबल पेशेंट जिसको बीपी का प्रॉब्लम होगा. ठीक है. इतना ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू इटोमिडेट. इसके लिए भी पूछते हैं. ओके. ये कार्बन देख रहे हो, एंड यहाँ पे इन्होंने आर बनाया है. तो फिर दे विल गिव द स्ट्रक्चर. दे विल से आइडेंटिफाई द नेम ऑफ दिस ड्रग एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री बताओ. तो वो आर क्यू है वो भी बताना पड़ेगा आपको. ओके. किसको नंबर 1 दूं? लेट्स ट्राई टू डू द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ दिस स्ट्रक्चर. whom should I give number 1 over here? बोलो. We First have this nitrogen. itomidate. First preference would be Uh, the nitrogen beside the carboxylate. okay. Second, The carboxylate group. it is not even attached to the carboxylate group. 1 इसको दिया. Second किसको दूं? इसके बाजू Others बोलो. हाँ. कार्बन beside nitrogen. See, how do you do this? First of all, we are talking about this carbon. Let me take another color now. I am talking about this carbon. Okay. Now I need to give preference number 1 to this nitrogen. ठीक है. अभी इस कार्बन पर CH3 अटैच्ड है, बेंजीन अटैच्ड है और एक हाइड्रोजन अटैच्ड है ऑन अ वेज पोजीशन अपेरेंटली. ठीक है. तो मैं सेकंड नंबर कौन से सब्स्टिट्यूएंट को दूं? मैम बेंजीन. करेक्ट. थर्ड इसको जाएगा एंड फोर्थ ये हाइड्रोजन को जाएगा. ठीक है. नाउ दिस इज गोइंग
बोलो, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, आर या फिर एस? एस। बोलो, एस। एस। तो यहाँ पे आर क्यों लिखा है गाइस? मैम, जो एन पे वेज वाला ये है फंक्शनल करेक्ट, ग्रुप, तो उसको वी विल कन्वर्ट टू डैश, क्योंकि हाइड्रोजन शुड बी ऑन वेज। करेक्ट। तो इसका नाम, इसका करेक्ट आंसर वुड बी एस बट आर। ओके, 4 ऑप्शंस आते हैं, आर, एस, आर बट एस, एस बट आर। इसका आंसर क्या होगा? एस बट आर। अंडरस्टैंडिंग? यस मैम। we've covered one for stereochemistry as well. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। कीटामीन। हर एक ड्रग के बारे में थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स ही याद रखना है, प्लीज डोंट फॉरगेट दैट। दिस इज हैलोसिनोजन, ठीक है। एक हमारे पास ड्रग है विच इज फेनसाइक्लिडिन। ओके, तो कीटामीन का स्ट्रक्चर जो है, इट इज मोर और लेस एंड फंक्शन इज मोर और लेस सिमिलर टू फेनसाइक्लिडिन विच इज अ हैलोसिनेटिंग एजेंट। ऑल्सो इट हैज अ पोटेंशियल फॉर अब्यूज। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? NMDA, दैट इज द एक्साइटेटरी वन, उस पर एंटागोनाइजिंग इफेक्ट दिखाएगा। ओके, रिमेंबर इट प्रोड्यूसेस डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक इफेक्ट। मतलब क्या, यहाँ पे क्या क्या हो रहा है देखो, sedation, amnesia, analgesia, unresponsiveness to the command and dissociation from the surroundings. So question आता है, which of these is the dissociative anesthetic agent? Answer should be ketamine. Why dissociative? Because it produces such an effect that the person dissociates from the surrounding. मतलब हम कुछ भी कह रहे हैं, it is unresponsive to the surrounding. Okay, it has dissociated itself. The patient has dissociated itself, and it has a good analgesic effect. So remember, dissociative anesthesia, ketamine. Adipose tissue पर effect कौन दिखाता है? Thiopental. Okay, इसमें बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। Okay, ketamine to norketamine, there is no CH3. Okay, demethylation हुआ है, N demethylation. ओके, जब से जो हम कब से पढ़ रहे हैं ना, एक्साइटेटरी, इनहिबिटरी। ओके, सो व्हाट हैपेंस एग्जैक्टली, द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आई हैव पुट अप हियर। ओके, जैसे हमने सेक्स हार्मोन्स के लिए पढ़ा था, देयर वाज डाइमेरिक डाइमराइजेशन, जब अगोनिस्ट बाइंड करेगा, अ प्रॉपर स्ट्रक्चर विल लीड टू रिस्पॉन्सिव एलिमेंट। वैसे ही यहाँ पर इट इज जस्ट इन वर्ड्स। ओके, क्या होता है, कैसे होता है, वो सब लिखा है यहाँ पर। ओके, सिंस वो कोलॉजी में चला जाता है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट टेकिंग टाइम टू कंज्यूम दिस पार्ट। ओके, लेट्स मूव अहेड। बेंजोडायापीन, ठीक है। सो फर्स्ट स्लाइड में ना हमने पढ़ा था रिगार्डिंग naloxone एंड फ्लुमाजेनिल, इफ यू रिमेम्बर दीज टू वर्ड्स, याद है क्या? हाँ naloxone एंड फ्लुमाजेनिल। मैम, ओवरडोज होता है तो ओके, वी इंक्रीज नैलेक्सोन। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सो अगर ओवरडोज भी हो गया, या फिर पेशेंट ज्यादा टाइम ले रहा है इन ऑर्डर टू रिगेन द कॉन्शियसनेस। ओके, so in these conditions, we give these antagonizing agents or the reversing agents. ठीक है, so we have these lorazepam, midazolam, diazepam, जो benzodiazepines है. Okay, these are used post or they do not cause post operative uh, these problems. ठीक है, and what do they do? Sedation, they will induce sedation, and use of large doses will delay the recovery and prolong the amnesia. The effect can be reversed by flumazenil. Please don't get confused. अगर benzodiazepine है, उसका antagonist will be flumazenil. Okay, opioids है तो फिर naloxone.
Moving ahead, opioid analgesics. We have a separate lecture for opioid analgesics, if I'm not wrong. Okay, so opioid analgesics के examples are fentanyl, alfentanil, sufentanil, remifentanil, all the fentanyl. यहाँ पे 4 ही drugs cover किए हैं. We have a whole bunch of drugs for opioid analgesics. Okay, so what are they doing? They are potent analgesics, can be used along with anesthetics to decrease the requirement. अगर किसी को कम डोज में यूज करना है या फिर यूज ही नहीं करना है anesthetic, तो they go for opioid analgesic. Okay, the patient remains conscious but drowsy in these conditions of opioid analgesic. ठीक है. There are few complications, not important, drug interactions. Okay, so drug interactions of general anesthetic. Opioid, मैंने purposely इसको ज़्यादा cover नहीं किया है opioid analgesics को, because you have a whole chapter for it. So drug interactions of general anesthetic. The patients on antihypertensives, they experience a marked fall in blood pressure. Why? Antihypertensive लेने से already blood pressure कम हो रहा है. General anesthetic agents भी blood pressure कम करवाते हैं. So because of this, there is a marked fall in blood pressure in case of using general anesthetics. Then there is CNS depression. People on corticosteroids can precipitate adrenal insufficiency, okay, due to stress. There is the insulin need of diabetics increases. Okay, so ये सारे drug interactions याद रखो. Halothane sensitizes the heart to adrenaline. Okay, the heartbeat increases in this case. टाइम मिला तो एक बार देख लेना. प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन मतलब बिफोर द सर्जरी जो भी मेडिकेशन देते हैं उसमें ये सब लिखा है. Can you go to previous slide? This one. Yes, yes. Got See, a it. lot of things happen. The doctor they have to take care of a lot of things before the surgery. So not important for GPAT point of view. The drugs used are okay. All right. Let's revise the parenterals. That is my main motto before concluding the lecture. अभी जल्दी से, हाँ, कोई भी please unmute and fast. Revise करो. I'll keep this slide here. We'll start with propofol. कोई भी unmute करो जल्दी से. Samarthan, will you do this? Sure, ma'am. Yeah, बोलो. Propofol, it's used intravenously with inhaled anesthetics. Its major parenterals, as in, they are used to control blood pressure, protect the brain, and they are of different types, such as small and hydrophobic, and substituted aromatic compounds. For IV, basically hydrophobic is mostly preferred. They are hydrophobic in nature, and this type of go from high perfused to low perfused organs, tissues. Propofol acts via GABA. Structure of propofol. Structure of propofol. Ma'am, I didn't give it. Contains a phenol फिनॉल group. फिनॉल बनाने का सबसे पहले एंड दोनों ऑर्थो पोजीशंस पर आइसोप्रोपाइल ग्रुप. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट. Yes, ma'am. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. It acts via GABA and enhances through it. Induction time is 15 to 45 seconds, and its general name Okay. is Biprivan. It is Correct. suitable for asthmatic patients and is used and was also used for status epithelius. एपिलेप्टिकस मतलब Epilepticus. एपिलेप्टिकस. Yes. Yeah. And its side effect is it can cause respiratory depression and fall in BP. करेक्ट. So in case of hyper
tension it can be given. Hmm. And phosphopropofol, it's the prodrug of propofol. It has an attached phosphate group Hmm. and is hydrolyzed by phosphatase. It is Correct. more induction time required at as hydrolysis is done, so more time is required, and its onset of action Correct. is 4 to 10 minutes. Hmm. Next. Next drug is thiopental. Correct. It is a very short-acting drug which belongs to barbiturate class. Uh, Hmm. sulfur is present, and there is presence of thio group. थायो नाम ही है बिकॉज वहां पे सल्फर है. पेंटाल बिकॉज पेंटाइल ग्रुप है उधर. ओके. Yes, ब्रेक ma'am. द वर्ड्स. या खास बात क्या है थायोपेंटाल का? Very rapid and very rapid onset, हम्म. and initially gives anesthesia. ओके. Blood level of the drug falls rapidly. It diffuses out of CNS into blood and then to less perfused tissues. फॉर एग्जांपल. Adipose tissue. करेक्ट. And for little time in adipose tissue, then its action will decline. करेक्ट. And it has a very long lasting hangover. नेक्स्ट. Next is etomidate. इटोमेडेट. Yeah, Hmm. yes, ma'am. And it contains an imidazole ring. Its Hmm. stereochemistry is S but R. It has a partition coefficient of 2000. It is short activity, and it is useful for hemodynamically unstable patients. करेक्ट. Now, ketamine, it's an hallucinogen. It acts as an antagonist on NMDA, excitatory receptor, and it produces Hmm. dissociative anesthesia effect. ओके. Then तो benzodiazepine एक ही and ड्रग opioid है. ओके. analgesics. ओके. So, yeah, हाउ इट्स एक्शन इज रिवर्स्ड बेंजोडायापीन्स का by using naloxone. flumazenil. No, no. Benzodiazepine, flumazenil. Opioids, naloxone. ऐसे याद रखो. Okay, ma'am. Benzodiazepines, flumazenil. Opioids, Naloxone. naloxone. Okay. Yes, ma'am. हाँ. Okay. तो याद रखना thiopental, adipose tissue, ketamine, dissociative, and the antagonist. इतना ही important है. Obviously the structures are not important in this chapter, but थोड़े थोड़े जो है drug उनका काम and उनका structure is important. ठीक है? So we are concluding with anesthetics, and the next lecture we will be studying opioid analysis. Okay. Okay, ma'am. So can we turn off?